Because you can't benefit from the class if you join the class after 15 days, 20 days, 7 days. If you miss classes like this, you can't benefit from the class because the class will not start from that day where you left. आप यहाँ छोड़े थे वहां से पढ़ाई आज नहीं होगी, बीच में 10 दिन पढ़ाई हुई और आप नहीं थे, तो आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो आपके समझ से बाहर रहेगा ज्यादा. तो ऑब्वियसली it's not very smart to miss classes. Good morning, sir. Good morning, Khushi. You guys have done your homework in the practice in the group. I can see some people have put their homework. The rest of you guys, put your homework. रख दीजिए. फैजान अली, Abhinav, Faiz, and the rest of you, if you do not submit your homework and if you stay absent, I'm going to write down the names and I'm going to fine you guys 100 rupees for being absent and for not doing homework. And those who are present and haven't done their homework, they'll pay a price of a fine of 50 rupees. 50 and 100. Those who are absent and haven't done their homework, obviously, they'll pay 100 rupees. And those who are present but haven't done their homework, they'll pay a fine of 50 rupees. And I had told you all, okay, very clearly that I was not going to be okay with this. You cannot take class lightly. जब आप हो तो आपको पूरा करना होगा अपना कोशिश. I personally feel फैजान आप बेहतर कर सकते थे. You could have done better. So let's read what. Actually, I read about Redford last night at 1 o'clock, but sir, I didn't write. That's what I'm saying. You could have done better. Yes, but sir, I totally. There is no room, sir. There is nothing to. Only there are faults, sir. No, actually, there is information that you could have mentioned. Actually, there is information that you could have mentioned. You didn't write that the Prime Minister flies hoist the flag on Red Fort on the 15th of August. You could have written things, but because you decided to read about it last night at 1 o'clock, you had 48 hours, you see, but you couldn't find time to read about it. That's why you felt the pressure, and that pressure made you write only this much. But like I said, you are capable of writing more. Yes, sir. Anyways, the Victoria Memorial. The Victoria Memorial was Queen's home. Yes. Her name's Empress Victoria. It was built in 1906. The Victoria Memorial is the largest building in Kolkata. Is this missing?
Okay, we are back. Its founder's name, ITS, because you're talking about a building, not a person. If you are talking about a man, then you will say his. If you are talking about a woman, you will say her. You're talking about a building. Its founders, ITS. Sir, IT share the apostrophe screen. S नहीं apostrophe S से आप जो करते हो वो हो जाता है it is, लेकिन यहाँ बताना है इसके फाउंडर का नाम, इसका फाउंडर, जैसे हम बोलते हैं मेरा, आपका, इसका, चीज का, राइट? तो its founder's name was Lord Curzon. It is very beautiful and historical. It is very beautiful and it is a historical place in Kolkata. Please come. Please come. Now it is a museum. Now is a museum. Now it is a museum. As I'm reading your text. Now is a museum. Now it is a museum. It किसके लिए? Building के लिए. That building, the Victoria Palace, it is a museum. अच्छा यहाँ देखना स्पेस. His founder's name is Lord Curzon. His किसके लिए बोलते हैं भाई? आदमी के लिए बोलते हैं. बिल्डिंग का फाउंडर ना. बिल्डिंग इट है कि ही है कि शी है. बिल्डिंग. तो इसके फाउंडर का नाम ITS. इसके जगह ITS. ITS. Its founder's name. Founder जैसे teacher's name, father's name, brother's name, वैसे ही founder's name. Its founder's name was Lord Curzon. Okay. The Victoria Memorial is the largest building. Is missing here. Say it fast. Previous sentence. The Victoria Memorial is the largest building in Kolkata. Right. There is a beautiful garden or there is beautiful garden? This is the most basic lesson. शुरुआत में पढ़ते हैं. A good student, a bad teacher, remember? Unit 1. A good teacher, a bad teacher, a good student, a bad student, a fast car, a slow car, a big town, a small town. So, a beautiful garden. There is a beautiful garden and a very big ground. But now it is under the Ministry of Culture. The Victoria Memorial isn't free. There are some old things, very beautifully written, Sayyid Faiz. You know, yes, you made a few mistakes, but you did a good job. Okay, very good job. This is what I wanted all my students to do. यही मुझे सबसे चाहिए था. कुछ और prepositions वगैरह यूज कर सकते थे. बाहर ये है, अंदर ये है, you know, you could have done more, but yes, you've done a good job. Abhinav writes, Udantpuri is the ancient name of Biharshi. It was a famous Buddhist Mahavihar, considered as the second oldest Mahavihar. There was a university in Udantpuri called Udantpuri University, founded by Gopala, King Gopala, the first ruler of Pal dynasty. Yes. Many Tibetan scholars studied here. Sir, There were, yes, Abhinav. sir, from the third paragraph, I have copied few lines, sir, because I don't understand. So I want to ask you. That's why I admit. There were about 50 teachers. This line is I'd copied. There were about 50 teachers. Everybody understands? There were Yes, sir. about And 50 after teachers. that, Is and after that, 50 teachers थे full लगभग, stop. out of which please come.
ये कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं है। Yeah, I Out think of so, but and where I find all these some of these data, and at that data time, is fine. I'm saying that sentence is not. है The sentences there were about 50 teachers, out of which जिसमें से out of which means जिसमें से yeah, out of which जिसमें से there lived about 100 monks. ऐसा कैसे हो सकता है? 50 टीचर्स थे जिसमें से 1000 मंक रहते थे, इसका कोई मतलब है? सुनो मेरी बात। I have 20 shirts, out of which 10 are very expensive. समझ में आया? I have 20 shirts, out of which 10 are very expensive. Out of which समझ में आया? सोचो फिर से। I have 20 shirts, out of which 10 are very expensive. I have 20 shirts, out of which 2 are as new, 2 are a gift. 2 are a gift. Okay. अब समझ में आया? मेरे पास 20 शर्ट है, इसमें से 2 गिफ्ट है। एनी प्रॉब्लम्स? तो यहाँ पर आउट ऑफ विच मतलब समझ में आ रहा है? उसका कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर। देयर आर 50 टीचर्स, आउट ऑफ विच देयर लिव्ड अबाउट 100 मंथ्स। और मैं वो सारे लोगों को बोलता हूँ जो आज एब्सेंट हैं, कल की डांट पड़ने के बाद, रोशीन, नौशीन, अगर तुम्हारे पास अच्छी वजह है, असलान इज एब्सेंट व्हिच इज सरप्राइजिंग, ओके, वो उनको एब्सेंट नहीं होना था आज। ही डिडंट टेल मी दैट ही वाज गोइंग टू बी एब्सेंट। और वो मुझे नहीं लगता उनके पास रीजन है कि किसी भी वजह से वो लापरवाही कर सकते हैं। बिकॉज जब आपको सेकंड मौका मिला है पढ़ने का, ठीक है, वो भी काफी लॉन्ग गैप के बाद, वो भी वजह है इसकी। बिकॉज आई थॉट कि आप मोटिवेटेड हुए अपने भाई के इम्प्रूवमेंट को देख के, तो फिर मैं क्यों मानूं कि आप लापरवाही करेंगे? नहीं करेंगे आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब? ज्यादातर स्टूडेंट जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो बस गफलत में इंग्लिश क्लास में आते हैं। गफलत मतलब समझते, मतलब गलतफहमी में, उनको कोई एक्चुअली पता नहीं रहता है कि क्या करना है उनको। वो बस सुनते हैं किसी से कि अच्छा क्लास है, चलो चलते हैं, ठीक है। उनको ये तक नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है वहां जाके। जो इंग्लिश सीखने का जो काम है, ये ऐसा काम है जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता होता है। कुछ स्टूडेंट्स बेसिकली ये सोच के चलते हैं मुझे जो टीचर कहेंगे वो मैं करूंगा और मेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। ये एक अच्छा सोच है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी टीचर को हायर कर रहे हो अपने पढ़ाने के लिए, तो आपको उसकी बात मान के सारे काम करने होंगे। लेकिन ये ऐसे लोगों की संख्या कम है जो ऐसा सोच के क्लास में आते हैं कि मुझे टीचर्स मेरे कुछ काम करवाएंगे और वो एक्सरसाइजेस करेंगे, हाँ वो चीजें बताएंगे, उसके बाद हम सीख जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कम है। ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं खासकर ऐसे क्लास की बात कर रहा हूँ जिसमें आप इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जिम्मेवारी सारी सोसाइटी को लेनी होगी, पेरेंट्स को लेनी होगी, टीचर्स को लेनी होगी, सारे। जो बच्चों के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि 2-4 महीने में आप किसी जगह बैठ के गप्पे मारोगे इंग्लिश में। क्या करोगे? गप्पे मारोगे इंग्लिश में, किसी ये टॉपिक किसी वो टॉपिक पे अपनी राय रख दोगे और आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ये CH वाले लोग हैं जो ऐसी राय डाल दी, बच्चों के मन में डाल दी ऐसी बातें। उन्होंने बच्चों को करप्ट कर दिया दिमाग में। उनको एहसास ही नहीं बच्चों को करना क्या पड़ता है सीखने के लिए। और इसके नतीजे में क्या होता है कि आप इस क्लास को छोड़ दें, आप किसी भी क्लास को विजिट करें, ठीक है, जहां लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको वो स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। आप विजिट करिए क्लास को, देखिए क्या होता है वहां पे। तो वहां आपको एक स्ट्रक्चर सिखाएंगे एक दिन में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर सिखाएंगे, उसके 4-5 एग्जाम्पल्स देंगे, फिर वो आपसे एग्जाम्पल्स बोलने के लिए कहेंगे। उसके बाद वो आपको एक टॉपिक देंगे, कहेंगे आज इस टॉपिक पर बात होगी। और ऐसे करके 15 दिन 1 महीने बात करेगा। आप मुझे बताएं कि जब आपको इंग्लिश बोलनी आती तो आप वहां क्यों जाते? टॉपिक पे अगर आपको बोलना आता, मुजम्मिल क्या बोल सकते हो आप किसी टॉपिक पर भी इंग्लिश में? आप बताओ मुजम्मिल, तो सिर्फ आप जब आए तो क्या बोल सकते थे किसी टॉपिक पे? हाँ, अगर मैं ये तरीका अपनाता तो मेरी कुछ स्टूडेंट जैसे फैजान, जैसे मौसम, जैसे अभिनव,
कुछ बोल देते, 2-4 लाइन ये लोग बोल देते, बाकी सबको गिल्ट फील होता रहता कि हमसे होता नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हमको सिखाया नहीं जा रहा, वो ये नहीं कहते। हम 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे अपनी बेवकूफी की वजह से, ठीक है, उनकी गलती नहीं थी, वो तो चाहते थे, गलत खराब लोग थे, फायदा उठाना चाहते थे, हमारी गलती थी। वैसे ही अगर कोई टीचर पैसे कमाने के लिए सिर्फ पढ़ा रहा है, उसको समझ नहीं कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, इससे कैसे सीख जाऊंगा मैं। आप, वो लड़का बोल रहा है, उसका बोलना उसको आता है, वो आते ही पहले ही दिन मेरे से बेहतर था, वो बोल रहा है मुझे तो आता नहीं है, आप मुझे क्यों कह रहे हो बोलने के लिए, मुझे सिखाने का काम था ना आपका, सिखा कहा रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर तो सिखाया उसने, बात समझ आ रही है, एक स्ट्रक्चर तो सिखाया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं कि क्या करना है। अभी मैं जो हिंदी में बात बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको अच्छे से क्लियर कर देने के लिए कि आपको कुछ करना है, वो पहले समझो क्या करना है। ये टास्क मैंने अभी क्यों दिया है पता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यूनिट 4 और यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 अगर सबको मिला लो तो आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने लायक मैंने बना दिए, इस लायक बना दिया है कि आप कुछ सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते। जैसे आप बोल सकते हैं कि वहां प्रेसिडेंट रहते हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर लिव्स देयर, आप ऐसा कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर लिव्स इन दिस बिल्डिंग, आपको याद है, आपको पता है कैसे आप कर सकते हैं, कुछ आप एबिलिटी आपके अंदर डाली गई है। उसके बाद कहा गया आप देखो, उसको ट्राई करके देखो। तो ये रोज के रोज हम लोग कुछ काम करते रहते हैं। आपको कितना बोलने के लिए मैं कहता हूँ रोज, आप गौर करो, लगभग 0। मैं आपको कोई इसी टॉपिक पे बोलने के लिए कहता हूँ ना, मैं आपके सामने कॉन्वर्सेशन रखता हूँ, कहता हूँ पढ़ो इसको, समझो इसको, हमेशा समझो 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 पे जोर रहता है मेरा, क्योंकि जब आप समझ जाते हो, बोलना एकदम आसान काम है। आपको हिंदी समझ में आने लगी, आप बोलने लगे। बोलने को इतना बड़ा बवाल बना दिया है लोगों ने दिमाग में, ऐसा मानते हैं लोग कि आपके अंदर इंग्लिश रहेगी बहुत सारी, आप बोल नहीं पाओगे। ऐसा कुछ लोगों के लिए सही है, बट आप में से ज्यादा के अंदर इंग्लिश है ही नहीं। आप बताओ फैज, जिस तरह की गलतियां आपने की हैं, इज छोड़ दिया, ठीक है, ए छोड़ दिया, आपको लगता है कि आप ऐसी गलतियां करने लायक हैं? नहीं ना, लेकिन हुई है ना, आपके सामने है ना वो गलतियां। आपको आप अपने बारे में आपकी क्या राय है कि आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं? इज छोड़ देंगे किसी सेंटेंस में, आपको ऐसा लगता है? आपको तो पता है इज मतलब क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस है ना कि इज तो हम यूज कर ही सकते हैं सही से, लेकिन आपने इज छोड़ा है। फिर भी मैंने आपको वहां हार्ट दिया है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये नेचुरल मिस्टेक, ये कमजोर स्टूडेंट की निशानी नहीं है, ये नेचुरल मिस्टेक है। जब आप कोई भाषा सीखते हो, ये सब चीजें होती है। आपके नजर में मैं बहुत तेज इंसान हूँ ना, अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। जब मैं इटालियन में बात करने की कोशिश करता हूँ या कुछ लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो ऐसी गलतियां होती है मुझसे भी। इसलिए मुझे पता है कि ये नेचुरल मिस्टेक्स है। लेकिन जिस टीचर ने कोई भाषा सीखी ही नहीं है, उसको क्या पता कि कौन सी गलतियां नेचुरल है, कौन सी गलतियां नेचुरल नहीं। आपको अच्छे से पता है इसका मकसद, लेकिन जब आप लिखने बोलने जाते हो तो गलतियां होती हैं। दैट्स वेयर वी नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस एवरीबॉडी। तो अगर मैंने स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट होकर कहा है कि आप सबको अपना काम सीरियसली करना होगा, तो मैं आपका वेल विशर हूँ, याद रखना। क्योंकि आज मेरे कल डांट के बाद कुछ स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं। आई होप कि उनके पास एक अच्छी वजह हो एब्सेंट होने की। कल जब वो आए तो मुझे बताएं कि मैं इस वजह से एब्सेंट था या थी। हालांकि उनको चाहिए था आज ही एक्सप्लेन करना in the group, right? That I am absent because of this reason, because of that reason. They should have done it. उनको करना चाहिए था। Because मैंने कल उनको डांटा था ज्यादा एक्टिव ना रहने के लिए, तो और एक्टिव रहिए कहा था हमने। और वो आज एब्सेंट होने वाले थे। उनका फर्ज बनता था कि वो मुझे कॉन्फिडेंस दे देते कि सर मैं एब्सेंट होने वाला हूँ आज या होने वाली हूँ आज इस वजह से। तो सर ने लिखा हुआ है हर सिस्टर इज इन हॉस्पिटल, राइट? I messaged her that some things are more important than class. Your sister is in hospital, don't worry about class. That's more important. So my suggestion to all of you is, first of all, know why you are here. Okay. You have tried well, Abhinav. Okay, good job. ये out of which कहाँ लिखा था अभिनव? किसी साइट पे लिखा था? Yes, sir. इससे ये पता चला आप लोगों को
कि साइट पे लिखी हुई हर चीज सही? Sir, data miss. Okay, out of which there lived about 100 months. Out of which मतलब समझते हो आप? अभी बताया ना मैंने आपको. Okay, I received 5,000 rupees as my salary. I received 5,000 rupees as my salary. मुझे 5,000 रुपए मिले सैलरी के तौर पे. Out of which I gave 2,000 to my mother. Out of which I gave 2,000 to my mother. जिसमें से 2,000 मैंने माँ को दिए. Okay, I kept 500 for myself. And I gave the rest 2,500 my wife. Out of which समझ में आता है? It's easy, right? Okay. तो यहाँ पर तो बनते ही नहीं. 50 में से 1,000 कैसे कुछ बात हो सकती है? Think about it. 50 teachers, out of which there lived about 1,000 monks. तो समझ में आया? कुछ मीनिंग निकला है ऐसे बात का? 50 टीचर्स थे, राइट? और उनमें से 1,000 मंक्स वहां रहते थे. इसका क्या मतलब निकालना? So this is wrongly written, right? This sentence is wrongly worded. इसको गलत तरीके से शब्द दिए गए हैं, right? This sentence is wrongly worded. This sentence is wrongly worded. Word मतलब शब्द होता है ना? This sentence is wrongly worded. It means इसमें गलत शब्द लिख दिए गए. कौन सा phrase एकदम गलत लिखा हुआ? Out of which, हटा दीजिए. There lived 1,000 monks. 1,000 monks रहते थे वहां. Belonging to both Hinayana and Mahayana. These Hinayana and Mahayana are two sects of Buddhism. Shia Sunni, Protestant and Catholic, Christians. There are sects. Christians होते हैं ना, Catholic होते हैं, Protestants होते हैं, and there are different sects in every religion, right? So in Buddhism, there are two sects. One is called Mahayana and the other is called Hinayana. Okay. So belonging to both Hinayana and Mahayana, there were about 1,000 monks living there, whose number increased to 12,000 later. जिनका नंबर 1,000 से 12,000 भी हो गया बाद में. It was a huge university. 12,000 people living there. It means it was a really big university. And where was it located, guys? In Bihar Sharif, in Pahadi Par area, Udanpuri University. There was a time Bihar Sharif was the capital of this whole kingdom. Pal dynasty, when Raja Pal, Gopal, okay, Gopal was the king, then Bihar Sharif, just like Delhi is the capital today, Bihar Sharif was the capital. Back then it was called Udanpuri. Imagine the prosperity of the people here. यहाँ के लोग कितने अमीर होंगे. Prosperity मतलब अमीरी, वैभव, धन. Okay, imagine the prosperity of the people who lived in this area. When 600 in 600 AD, am I right? Now it was 600 AD. So it means around 1,400, 1,500 years ago, or 1,300 years ago, 1,200 years ago, this place was the capital. So 1,200 years ago, जो लोग यहाँ रहते होंगे, okay, हमारे कोई नहीं रहते थे, because my grandpa came here 40 years ago from Barbiga. तो बरबीघा और उदनपुरी काफी डिस्टेंस माना जाता होगा ना उस समय. 15 kilometers, 20 kilometers. How far is Barbiga from here? 30 kilometers. So 1,300 years ago, 30 kilometers was a long distance, right? Because they only had horses, right? They only had horses and bullock cart. So 30 kilometers was a long distance for people to walk and travel. Today it's nothing. You take your bike and get there in 10 minutes, right? Half an hour. So my family were in Barbiga. We are not from Bihar Sharif originally. Okay, we got this house around 40, 50 years ago. Later in 1193 AD, it was destroyed by Bakhtiyar Khilji. In no, I think this you got wrong. We do not know for sure. I think it was destroyed earlier. Nalanda se bhi pehle isko destroy kar diya gaya. This is what people say, historians say. I'm not very sure about it.
It was destroyed even before Nalanda University. Okay, Tausif has written beautifully, but beta Tausif, you could have done more, you know? You could have done more. आप भी अच्छा कर सकते थे और आपकी क्षमता है, okay? But आप लोग nervous होते हो, मुझे पता है, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं कहूंगा, ठीक है? And I'm also going to the Hawa Mahal. Rajasthan's big city Jaipur. Rajasthan's big city is Jaipur. Jaipur is wait. Okay, wait for a second. Tausif, but it is written Tausif here. You have posted from his mobile. Okay, you have written it. Well done. Rajasthan's big city is Jaipur. Is missing it. Jaipur is Rajasthan's big city. Rajasthan का बड़ा शहर है. Jaipur is a big city of Rajasthan. Jaipur is a big city. Okay. In Rajasthan ज़्यादा बेहतर होता. Jaipur's Hawa Mahal is near the center of the city. ये भी अच्छा है. Jaipur's Hawa Mahal is near the center of the city. Hawa Mahal was built in 1799 by Maharaj Savai Pratap Singh. There are 953 small windows. There are 953 small windows. There are नहीं बेटा, ये windows, they are on all 5 floors. ये 5 floors पे हैं. They are. आप बोलते हो ना, there are all on. ये confusion बेटा, आपको समझना पड़ेगा. ये जो 953 windows है ना, ये 5 floors पे हैं. हाँ, टोटल 5 फ्लोर्स पे ये 953 विंडोज है. आप विंडोज की बात कर रहे हो इस सेंटेंस में कि नहीं कर रहे? इस सेंटेंस में विंडोज की बात कर रहे हो कि नहीं? तो आपको बोलना चाहिए था कि 5 फ्लोर्स हैं. देयर आर 5 फ्लोर्स. आप ही बोलो 5 फ्लोर्स हैं. देयर आर 5 फ्लोर्स. But there isn't any ladder. Okay. There aren't any ladders. There aren't any stairs. There aren't any stairs. सीढ़ियां नहीं है. There aren't any stairs. There aren't any pillars. There aren't any pillars. In any use करते हैं plural के साथ, याद है आपको? A use करते हैं singular के साथ. There aren't any pillars. And there are 953 rooms. Rooms भी हैं. Okay. तो लोग कैसे आते हैं एक रूम से ऊपर एक से दो? Okay, never mind. I can't grill you. आपने कोशिश अच्छी की है. ऋषिकेश ने लिखा है, खुद से लिखा है ऋषिकेश. वाह बेटा, वेल डन. देखो चुप रहने वाला इंसान कैसे, मैंने कहा ना, मैं सिखाता हूं यहाँ. मैं इसीलिए हूं ही यहाँ पे. मैं इसलिए नहीं हूं कि किसी को बोलना आता है तो उसको जगह दूं बोलने के लिए. बोलने के लिए तुम्हारे पास घर पे भी जगह है. 4 दोस्त मिल जाओ, बैठ जाओ, बात करने लगो. बोलना आता ही है तुम्हें से. यहाँ वो लोग पैसे फेंकते हैं आकर के जिनको सीखना होता है. ठीक है, जिनको सीखना होता है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जॉब, क्योंकि मैं ऐसे चेंजेस ला सकता हूँ. बहुत लोगों में लाया जिनको बिल्कुल इंग्लिश लिखना बोलना नहीं आता था. दे रोट. चलिए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने. द पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा. राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस. द राज्यसभा हैज 200 more than members. ऐसे बोलते हैं, राज्यसभा हैज more than 200. more than 200. 200 more than की जगह 200 से ज्यादा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं more than 200. कोई फर्क नहीं पड़ता. द राज्यसभा हैज more than 200. हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, फैक्ट्स नहीं. ठीक है ना? तो क्या आप बोलेंगे? द राज्यसभा हैज more than 200 members. These members are elected. 12 members are nominated by the President of India. After 2 years, 1/3 members of Rajya Sabha are replaced. ये कॉपी किया इन्होंने. सही है, लेकिन इंग्लिश तो आपने नहीं लिखी है, ये तो पक्का है. मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? राइट? ये सेंटेंस मैंने खुद से नहीं लिखा है. हाँ, पता चलता है मुझे. बताओ कैसे पता चलता है?
जिस चीज को लिखने में कुछ स्पेशल नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए और वो मैंने दी नहीं, और मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके पास है नहीं, इतने दिन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना आपसे बात करते हुए कि आपके अंदर कौन सी नॉलेज है कौन सी नहीं इंग्लिश के मामले में, वो कैसे यूज कर लेंगे आप? आपको गलती होने करनी चाहिए। हाँ, समझ तो जाएंगे आप, मुझे पता है, समझ तो आप जाते ही है, ठीक है, और इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हैं। ये जब आए थे जिस जगह पे, मैं कुछ अपनी तारीफ भी करूं इनकी भी तारीफ करूं, आप सब मेरे बारे में जो भी राय रखते हो, मैं अपने बारे में बड़ी अच्छी राय रखता हूँ एज ए टीचर, ठीक। मैं कुछ स्टूडेंट्स को एक दिन का डेमो क्लास नहीं देता, और कभी कभी मेरी मर्जी, मैं समझता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप अगर मैं बोलूं आपकी कहानी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। जब ऋषिकेश आए क्लास में, तो ये पोजीशन में नहीं थे पे करने, ठीक है, इनके पास कुछ ही पैसे थे। मैंने कहा, इनसे बात की, और मैंने कहा आप क्लास में आइए। मैंने इनके जज्बे को देखा, इनको इंग्लिश सीखना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन जो इनके बात करने का तरीका था मेरे साथ, इनके चेहरे पे जो भाव थे, मैं उनको पढ़ सकता था आसानी से कि ये एकदम से डेस्परेट है इंग्लिश सीखने के लिए, पूरी तरह से एकदम व्याकुल है कि कोई इनको सिखाए इंग्लिश, ठीक है। और मैंने इनके चेहरे पे वो भाव पढ़े। ऑब्वियसली आई हैड टू अलाउ हिम, क्योंकि मैं हूँ किस लिए, पैसे तो मैं कमाता ही हूँ इतने लोगों से, अगर किसी को ऐसे ही नहीं पढ़ा सको तो किस लिए। लेकिन जब ये क्लास में आए, धीरे धीरे, मैंने कोई प्रेशर नहीं बनाया। आप पे कभी कोई प्रेशर बनाया कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो ऐसे करके? नहीं ना, बैठे रहो, सुनो, सीखो, सीखने का मौका दो कोई, है ना। मैं वो इंसान हूं जो आपको सीखने का मौका देता है क्लास में बैठ के। लेकिन जब आप बदमाशी करोगे, जब आप इतने अच्छे होगे, जैसे नौशीन बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उनके पास दिमाग बहुत है, उनकी इंग्लिश भी आती है, लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत करके आगे नहीं बढ़ने का जज्बा है, तो और मेहनत करे ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़े। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम नहीं आपसे हैप्पी हो सकते हैं। मैंने इनको अलाउ किया, ये खुद ब खुद मुझे पैसे देने लगे ला करके कि सर ये पैसे आए थोड़े से दे दीजिए, ठीक। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा आप आराम से क्लास करो ना। बीच में इनको ग्रैप लेना पड़ा, बिकॉज ही लिव्स इन राजगीर एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम हियर। ही हैड अ बिग गैप। देयर इज दिस बॉय, 4 साल बाद मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, पता है तुम्हें? 4 साल के बाद वो गैप लेके आया है। उसने जब कहा था, एक दूसरे लड़के की बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले उसने पे करा, ठीक है, उसमें फी मेरी 3,000 3,500 रुपये होगी, ठीक है। उसने फी वो पे किया, और अभी वो आके क्लास कर रहा है। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब तुम आओगे आई विल टीच यू, बिकॉज ही हैड टू लीव बिकॉज ऑफ सम रीजंस, उनको कुछ वजह से छोड़ना था। So I respect myself for what I do. I'm not sitting here just to earn money. Yes, earning money is my responsibility, my need, because I have a family. No problems with that. I don't feel guilty कि मैं पैसे लेता हूँ, मेरे काम है ये. But what I do honestly, sincerely as a teacher, I understand that. I'm here to help everybody. And I am doing that with the utmost sincerity. जितना सिंसियर हो सकता है कि आदमी, उतना सिंसियर होकर मैं ये काम करता हूँ। कोई झूठ फरेब नहीं मेरे काम में। आपको गलत बोलना है तो गलत बोलूंगा, मुंह पे बोलूंगा। आपको बुरा लगता है, इट्स योर प्रॉब्लम। आपने अच्छा किया, आई विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट, चाहे 4 लोग जले तो जले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट आई हैव टू से व्हाट इज राइट टू बी सेड हियर इन द क्लास। सो मेहनत कर रहे हैं ये, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये आपकी उम्र से थोड़े ज्यादा के हैं। ऋषिकेश, आपकी उम्र क्या हो रही होगी? 25, ठीक है। और अब ये इतने कन्विंस्ड है इस क्लास के बारे में कि हाँ कैसे पढ़ाया जाता है, कि अपनी बहनों को ये कन्विंस करे कि भाई जाओ क्लास में, ठीक है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन जाओ, वहां रहोगे तो सीख जाओ। ये कॉन्फिडेंस इनको कैसे आया है? यहाँ रह करके। फर्स्ट टाइम तो ये आए थे किसी की बात सुन के कि बड़े अच्छे टीचर है, तो ये अप्रिशिएट करने के लिए एक अंदर जज्बा होना चाहिए। ऋषिकेश को आप लोगों ने क्या गौर किया कि वो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, राइट, एंड ही सिट्स हियर लिसनिंग टू मी। ये कभी अगल बगल वाले से ज्यादा बात नहीं करते, मैं पढ़ा रहा होता हूँ। इट मीन्स ही सिंसियर। बस यही चाहिए। आप लोग और बाकी टीचर्स, बाकी इंस्टीट्यूट को अच्छे लोग चाहिए इंग्लिश में, मुझे अच्छे नहीं चाहिए। आप ब्लैंक आओ ना, खाली आओ, आपको इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम, यही तो मेरा काम है, सिखाना। लेकिन आपको सीखने लायक रहना चाहिए, आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम उन स्टूडेंट से होती है जो अच्छी खासी इंग्लिश लेके आते हैं क्लास में, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। उन्होंने 8-10 साल में कुछ जमा करा है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, अच्छे टीचर्स मिले, कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा है, अब वही इंग्लिश को रिपीट करते रहते हैं। भाई उससे आगे नहीं बढ़ जाना, तुम्हें ऐड करना होगा। तो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज बी सिंसियर। अपने काम के प्रति
निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। शुद्ध हिंदी बोल गया मैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज करूं, कोई और वर्ड दो तो। इतना भारी निष्ठावान मतलब आपका जो काम है ना, उसके प्रति आपको ईमानदार रहने की जरूरत। ये मेरा काम है, मैं इसमें बेईमानी नहीं करूं। एज ए स्टूडेंट योर जॉब इज टू गो होम एंड रिवाइज योर लेसन्स, डू इट एवरी डे। और फिर से बात करता हूं, जब भी तुम्हें भारी लगे कोई चीज, मुझे बताओ कि भारी लग रहा है, मैं हूं ना आपका बोझ हल्का करने के लिए। ले लूंगा, लाओ थोड़ा सा मेरे सिर पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू। बट आप तो सोच रहे हो, सपने में जी रहे हो, उन लोगों ने जो बोल दिया कि 4 लाइन बोल देना है जाकर के बैठ कर, ऐसे नहीं होता। डू योर बेस्ट। लोकसभा इज ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, कॉपीड सेंटेंस। लोकसभा इज a body of elected members, men and women of 18 years above their vote। ये कोशिश की खुद से लिखने की। जो 18 साल से ज्यादा के लोग होते हैं वो वोट करते हैं। men and women above 18 years, 18 above 18 or above 18 vote, okay, they vote, they cast their vote, they give their vote। Members are elected for 5 years। It has 545 members। The minimum age to become a member of the Lok Sabha is 25 years। I salute your effort, okay? Keep it up। ऐसे ही कोशिश करते रहें। All these people, you guys have done a great job, okay? Because मैंने आपको 2 दिन दिए थे। फैजान writes, the Red Fort or Lal Killa is in Old Delhi। It is historical place। देखो, आप प्लेस बोल रहे हो ना, आपको एक प्लेस, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस होते हैं ना, प्लेस का प्लूरल प्लेसेस, तो आपको यहाँ ए बोलना पड़ेगा। इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। इंग्लिश में जरूरी है। आप नहीं बोल सकते आई एम गुड टीचर, आपको बोलना होगा आई एम ए गुड टीचर। हर हाल में एडजेक्टिव के पहले ये रखना पड़ता है, आई एम ए गुड टीचर। इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। अच्छा, आप ये प्लेस बोलना चाह रही है, जगह बोलना चाह रही है, बिल्ट बाय शाहजहां। ओके। रेड फोर्ट इजंट फ्री। The ticket price for Indians is 35 rupees and for foreigners it is 500 rupees। Like I said, फैजान चाहते अगर 1 घंटा उन्होंने दिया होता, 1 घंटा, ठीक है, he could have written a nice text like Abhinav, okay, अच्छा लंबा खास लिख सकते थे और चीजें लिख सकते थे, but he read about it last night at 1। आप समझ सकते हो 1 o'clock is not time to study। No, sir. 10 to 1, sir. 3 घंटे पढ़े आप। Yes, sir. Because I have bad habits, sir. When I do something, I want to 100% perfectly, sir. It is my bad habit. That's why, sir. You should First of have all, gone to different sites। रेड फोर्ट के बारे में बहुत सी जानकारी आप दे सकते थे, कहाँ क्या है, कैसा बना है, आगे क्या है, पीछे क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, क्या होता है, डे टू डे वाली भी बातें, लाइक थिंग्स दैट हैपन एट द रेड फोर्ट। तो ये सब बता सकते थे। बट अगेन फैजान, आई एम सेइंग कि आप केपेबल है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कभी yes, sir. कभी दिमाग नहीं काम करता है, ओके, बट यू कैन, आई नो। मुशर्रफ इमाम, चार means 4 towers और मीनार सिग्निफाई, देखो कॉपी पेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, कॉपी पेस्ट मैंने कल मना किया था करने के लिए, ठीक है। द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, तो ये तुमने ऐसे है, ये लड़का भगा देता हूँ इसको अभी कभी। मुशर्रफ इमाम, मुशर्रफ हैदर है, मुशर्रफ इमाम नहीं है। देखो ये ऐसी बीमारी है ना जिसको, देखो बात ये ऐसा है कि तुम्हें 10 लोगों ने दोस्त बना करके किया है तुम्हारे साथ विश्वासघात। अब तुम्हारे अंदर दोस्त नाम से ही बहुत ज्यादा डर है। कोई दोस्त बोला इसका मतलब मेरे को बेवकूफ बनाएगा। तो कोई कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना, जो तुम्हारे लिए जिंदगी देने के लिए तैयार है, तुम यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे 10 बुरे अनुभव जो रहे। ये मुशर्रफ इमाम जैसे स्टूडेंट्स को पर मुझे इसलिए दया आती है कि इतना समझाने के बाद कि तुम्हें कोशिश करनी, राइट, कोशिश करनी, उनको ना बेइज्जती का इतना डर है ना
इनके मन में क्या किस चीज का डर है? बेइज्जती का। इतना डर है कि वो बस उस डर के आगे कुछ नहीं देखता। उन्होंने क्या किया, ये 2 लाइंस इंटरनेट से कॉपी कर बस, और कुछ नहीं किया, उसको तार दिया हूं और यहाँ पोस्ट। कुछ एफर्ट नहीं है खुद खुद से, बस उन्होंने 2 लाइन कहीं से कॉपी पेस्ट। जो चीजें सीखे हम लोग, देर आर, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन, बिहाइंड, ये होता है वो होता है, ऐसे कुछ बात वो लिखने की कोशिश नहीं कर पाए। आउट ऑफ द फियर ऑफ बीइंग इंसल्टेड, बीइंग रॉन्ग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बड़े हो जाने के बाद। आपको ये छोड़ देना होगा, आप गलतियां करो ना, क्या दे। और अब बताएं मुझे कि मैं किसको फाइन करूं। सबसे पहले फाइन करूंगा मेरे गणपत को। गणपत चल पैसा ला, गणपत चल फाइन ला। अरे गजब, फोटो डाल दे भाई। somebody please put the photo in the group। मैंने तो सोचा गणपत से पैसे ले लूं, ओके, बट ही डजंट वांट टू गिव मी मनी। तसी चल फाइन ला। put the photo in the group, put the photo in the group for everybody। And those, again, those who are absent, I'm going to ask them to pay a fine। जेबा बेटा आपने किया होमवर्क? Yes, sir, I have written, but not much idea comes. Please add it, please put it in the group beta, don't worry। Oh, okay. Musharraf, have you done your homework? Musharraf Heather? No, 50 rupees fine। Khushi, have you tried to write something? Khushi, Yes, sir. have you done your homework? Sorry, sir. I am feeling well. 50 rupees from your husband's salary, and Okay, tell your sir. husband sir has fined you for not doing homework। Okay, sir. ओके सर, सही है। कुछ कमाना पड़े तब तो देने में बुरा लगेगा। हाँ ओके सर, बहुत बढ़िया बेटा, ओके सर। This is Zebas, the Red Fort of Delhi। It was built by Shah Jahan। Red Fort is famous for various reasons, and most tourists come to visit। Tricolor hoisted here on the 15th of August and 25th January, the Prime Minister does। Red Fort is a very large area. It is a historical place। There is a place in it where Jodha used to worship। I know sometimes it happens, but you guys have your mobile phones, okay? You can check that there, where Jodha used to worship there, outside a small shop। Okay। ए लगा दिया बेटा, शॉप्स भी लिखा है, ए भी लगा दिया है जेवा बेटा। ए भी और शॉप्स भी, ए भी और शॉप्स भी। ये नहीं होगा सर। आप ही सोचो ना, जब शॉप्स लिखते हो, देर आउटसाइड, बेटा ऐसे लिखना था, आउटसाइड देर आर सम स्मॉल शॉप, राइट जेबा? आउटसाइड देर आर सम स्मॉल शॉप्स। Okay, sir. Outside there are some small shops। Again, you have done a good job बेटा। I know जेबा, आपके एब्सेंट होने से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, I agree, ठीक है, but don't worry, we will get it back, okay? No issues, no problem। Lotus Temple, I like Lotus Temple because it is sharp shape, its shape, its shape, it's Sir, इसका shape ना। outside there are small shops. हाँ, आउटसाइड देर आर सम स्मॉल शॉप्स, बाहर थोड़े कुछ शॉप्स भी है, स्मॉल शॉप्स भी है। अच्छा अच्छा बताओ, इसका और ये है इट इज को एक वर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? IT अपॉस्ट्रोफी एस ना। आई इज का जो आई गायब होता है उसके लिए अपॉस्ट्रोफी आता है ना। आई एम, तो जब साथ में लिखते हैं तो आई के बाद अपॉस्ट्रोफी और एम दिखते हैं ना।
तो ये जो अपॉस्ट्रोफी वो किसी लेटर के मिस होने के लिए है। ए गायब हो गया तो उसके जगह वो आ गया। अच्छा सोचो, यू आर जब एक साथ करते हैं तो यू और ए को ड्रॉप करके वहां पर क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी। यानी अपॉस्ट्रोफी जब भी करते हैं तो किसी लेटर को ड्रॉप करने के लिए अपॉस्ट्रोफी आता है, इसका मतलब कोई लेटर ड्रॉप हुआ है, उसी की जगह आता है ना वो। सोचो सोचो, आप लिखते हो ना, इजंट, इज, एन, अपॉस्ट्रोफी थी, कौन सा लेटर ड्रॉप हुआ? क्या बात करते हैं, ओ की जगह है ना वो। तो अपॉस्ट्रोफी किसी लेटर को ड्रॉप करने के लिए आता है एक, और दूसरा पोजेशन के लिए आता है। जैसे हम बात करते हैं राकेशेस, मोहन्स, किसी नाम के साथ लगाते हैं ना, इंडियाज, भारत का, राइट। जब बोलते हैं माई, योर, तो माई आई से बना, आई के लिए है, योर यू के लिए है, तो इट के लिए है इट्स, ITS। तो इसका शेप कैसे लिखना था, इसका शेप ITS, इट्स शेप is similar, its shape is similar to the shape of a lotus ना। अच्छा ऐसे बोल दो बेटा, it looks like a lotus, simple, it looks like a lotus, it looks like a lotus. Lotus temple takes its name from its shape. There is a big living room, क्या बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। हाँ, and there are lots of armchairs for visitors to sit. Then तो वो चेयर्स डाल के किसके लिए रखा हुआ है? फनी, हम नहीं गए कभी, I've never been there, that's why I do not know. Okay, there are lots of armchairs. It was built in 1986. It's open to all the public to visit this beautiful temple. There is a beautiful garden. Sounds great. बहुत अच्छी कोशिश बेटा आपकी तरफ से, ओके। आप मेरे अच्छे स्टूडेंट में से एक हो, आप रेगुलर हो, आप ध्यान से सुनते हो मेरी बात, और सबसे बड़ी बात है कि आपके सीखने की क्षमता बढ़िया है। डोंट वरी, यू विल लर्न, ओके, यू आर डूइंग फाइन, डोंट वरी एट ऑल। गणपत, ओके, गणपत, बेटा अब मैं जवान नहीं रहा, मेरी आंखें उतनी अच्छी नहीं रही। हाउ कैन आई रीड दिस? Just take the photo of only the text, guys, not the whole page, please. Take the, can I do some editing here, possible? No, I can't. Okay, no. You have to take another photo, just the text, okay? So that it looks bigger. Red Fort. The Red Fort is a great historical building. फिर से बता रहा हूँ, A, ठीक है? Red Fort was built in the 16th century by Shah Jahan. It is located in the center of Delhi. The Red Fort is the most beautiful building. Our Prime Minister hoists national flag at Red Fort. Lovely at the Red Fort. There are two main gates. The Red Fort ticket price is 30. ये उसने कितना अच्छे से लिखा ये चीज कि the price for the ticket for Indians is 35 rupees. Your friend Faizan Ali, he wrote it beautifully. And for foreigners it is 500 rupees. Okay, जरा देखना उसके सेंटेंस को, ओके। ये समय के साथ आ जाएगा, सब में क्षमता बढ़ जाती है, ओके, करेक्ट लिखने की।
about 1,000 people a day visit. There are 2 floors. The height of Red Fort is 32 meters. Beautiful. Well done. Good job. He is also, like I said, there are some very good students. और हाँ, मैं ये मानना चाहता हूँ कि मेरे बाकी स्टूडेंट जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो शुरू कर देंगे बाकी को देख के कि लोग इस लायक बने हैं कि हाँ इतना लिख रहे हैं, अच्छी बात है, अपने मन से लिख पा रहे हैं, अपने सेंटेंस से लिख पा रहे हैं. अभी तो we are only in unit 4, right? We are going to do a lot more. And let's study that text, guys. Remember, we were reading a text. What was the text? My new flat. Let's go there. You guys have done a very good job, all of you. Where were we? He says now that there is there is quite a big kitchen. She says there is quite a big kitchen and a table in the center. This is good. I hope you understand how to use the word this alone. पूरी बात को बोलने के लिए this बोल सकते हैं. मेरी बात सुनो. My father and my family members are very open-minded. This is good. They never stop us. They never stop us from doing anything. Okay, like this. So this पूरी बात के लिए बोल सकते हैं आप. Okay, this is good because I like cooking. I love cooking and I can invite my friends to dinner. Invite somebody to some place, to something. I will invite you to my wedding. I will invite you to my wedding. हम आपको बुलाएंगे, invite करेंगे अपनी शादी पे, अपनी शादी में. हिंदी में ही सब वर्ड बोलते हैं, शादी में, शादी पे. इंग्लिश बोलते हैं I will invite you to my wedding. Okay, yes, वो ध्यान रखना. नहीं तो जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, बात बोलते हैं मेरा प्रीपोजिशन कमजोर है. कुछ भी कमजोर नहीं होता, ध्यान कमजोर होता है. क्या कमजोर होता है? ध्यान. ध्यान कमजोर है तो कभी आपका प्रीपोजिशन कमजोर होगा, कभी आपका स्पेलिंग कमजोर होगा, कभी आपका ग्रामर कमजोर होगा. आप ऐसी बातें बोलते रहेंगे, लेकिन सच्चाई है कि आपका ध्यान कमजोर होता है. टेक अ लुक, वहां क्या लिखा है? आई कैन इनवाइट माय फ्रेंड्स टू डिनर. किस चीज पे बुलाएगा? दोस्त बुलाएंगी वो दोस्तों को डिनर पे. तो हम आपको अपने बर्थडे पे बुलाएंगे तो कैसे बोलेंगे? इनवाइट you to my birthday party, right? मेरे पड़ोसी मुझे पार्टी में बुलाते नहीं है. My neighbors don't invite me to their parties. Okay. The living room has one big window. The living room has one big window. There is a big window in the living room. Okay. The living room has one big window. Easy sentence, guys. The living room has. देखो यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, हिंदी में बोलते हैं ना लिविंग रूम में एक बड़ा विंडो है, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में. लिविंग रूम में एक बड़ा विंडो है, तो वो क्या कर देते हैं? इन द लिविंग रूम हैज बोल देते हैं. जबकि उनको समझना चाहिए कि द लिविंग रूम हैज वन बिग विंडो. जैसे बोलते हैं आई हैव, यू हैव, वैसे ही द लिविंग रूम हैज. इंडिया हैज great scientists. Bihar Sharif has lovely shops. I have good students. Similarly, यहाँ क्या बोलना है हमें? The living room has one big window. यहाँ पर अगर कोई इन लगा दे आगे, इन द लिविंग रूम हैज वन बिग विंडो, तो प्रॉब्लम हो जाती है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा जाता है पूरा. अब बोल रहे इन द लिविंग रूम हैज, मतलब क्या होता है? द लिविंग रूम हैज, कोई चीज बोलते हैं हैज या हैव. जैसे बोलते हैं माय मदर हैज, माय फादर हैज, ऐसे ही बोलते हैं ना.
my mother के जगह the living room has. The living room has a big window. It means there is a big window in the living room. All right. In the living room, there is a big window. The living room has a big window. It faces south. It faces. इससे क्या पता चला? हाँ, विंडो का मुंह साउथ की तरफ है. विंडो साउथ में है. It faces south. It here refers to the window. यहाँ it किसके लिए है? तो it faces south. यहाँ वर्ब क्या है हमारा? फेस है ना. अगर हमें नेगेटिव बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? इट. वेरी गुड रंजीत. क्या बोलेंगे बेटा? आप लोग बताइए. इट डजंट फेस नॉर्थ. इट डजंट फेस ईस्ट. अच्छा, आप ये दो विंडोज देख रहे हो अपने क्लास में. लुक एट दीज टू विंडोज. लुक एट दीज टू विंडोज एवरीबॉडी. टेल मी, these windows face south or north or east or west? बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो. बोलो, these two windows. आगे बोलो. आप फेसेस बोल रहे हो, गौर करो. फेसेस क्यों? फेस बोलना क्यों? फेसेस तो तब जब इट है. अब these two windows प्लूरल बोले, यानी दे हो गया ना आपके लिए ये. उसके बाद एस लगाना था आपको वर्ब में. तो क्या बोलना था? फेस. These two windows face south. आप बोलो, when you describe your classroom, you will say, my classroom has three big windows. My classroom has three big windows. Two face south and one faces west. And there is a big door. It also faces west. West, not west, west. Okay. All right. Faces clear? Okay. So think of your bedroom. Okay. Is there a window that opens outside in your bedroom? Which direction does it face? Which direction does it face? मतलब किधर है खिड़की? यही मेरा हिंदी में पूछना है. किधर है खिड़की? तो किधर मतलब बोलने सबको पता है, खिड़की दीवार में होती है. यहाँ किधर का मतलब है? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. कैसे पूछेंगे? Which direction does the window in your living room or bedroom face? Which direction does it face? The window in your bedroom, the window in your living room. अच्छा, अब घर के अंदर खुलता है तो उसमें ये डायरेक्शन बोलने की कोई फायदा नहीं. क्या फायदा? राइट. बाय द वे, यहाँ लिखा है, गौर से सुनिए. It faces south, so it is always very sunny. If you have a window which faces south, then sunlight will always come in. You know, in the summer, in the winter. Okay. If you have a window which faces south, then the room will always be lighted and sunny. You know that. But if you have a window which faces east, then your room will be only lighted in the morning. Right? Because sunlight comes from the east direction in the morning. If you have a window which faces north, you will not get much of sunlight at all, ever. North से कभी sunlight नहीं आ सकता आपको यहाँ. अगर आप southern hemisphere में हो तो बात बदल जाएगी. Okay, but as long as you live here, the sun will never come from the north. Okay, because the way it moves is this. The sun goes this way, east, southwards, and then west. Northwards नहीं जाता है. Okay. Next. I have two comfortable old armchairs. I have two comfortable old armchairs. आगे बोलो. Don't have a sofa. But I don't have a sofa. I have two comfortable old armchairs, but I don't have a sofa. Number 8. Because the room is quite small. I don't have a sofa because the room is quite small. Yeah, room थोड़ा छोटा है. हिंदी में कैसे बोलेंगे? Room थोड़ा छोटा है. The room is quite small. See, I don't have a sofa in my living room. I don't have a
sofa in my living room because the room is quite small. Okay. Next line. There isn't a garden. There isn't a garden, but there is a small balcony in my bedroom. There isn't a garden, but there is a small balcony in my bedroom. My I want to put a chair there. I want to put a chair there. There means beta. वहां कहाँ? In the balcony bolo. In the balcony. There means I want to put a chair in the balcony so I can sit in the sun on summer evenings. So I can sit in the sun ताकि हम धूप में बैठ सके. Sit in the sun. अब बताओ यहाँ sun मतलब धूप की सूरज. अगर यहाँ सूरज बोलेंगे तो सूरज में बैठ सके. ऐसे बोलते हैं क्या? हम लोग किस चीज में बैठते हैं? तो I can sit in the sun. आपको बचपन से धूप के लिए कौन सा वर्ड सिखाया गया है? सनलाइट. सनलाइट. कोई जरूरी नहीं कि सनलाइट. सनलाइट ठीक है, बट ओनली सन इज ऑल्सो इनफ. 3 वर्ड्स होते हैं, सनशाइन, सनलाइट एंड द सन. टेक लुक. Sunset. Yes, Mushara. I want to put a chair there. I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer evenings. She likes to sit in the sun, right? उसको धूप में बैठना अच्छा लगता है. In the summer season. Why? Because she doesn't live in Asia. Here in Asia, like India, China, Pakistan, you can't sit in the sun in the summer season. You can sit in the sun in winter season. In the summer season, the sun is so hot, you can't sit in the sun. Isn't it? Nobody sits in the sun in the summer. But in those countries, they can't sit in the sun in the winter because there is no sun in the winter. Mostly, in European countries, they have very cold winters. They have very cold winters. When it is winter season, the temperature goes down to -20, -15, -10, -5. No sunlight. Very occasionally they have some sunlight, but they have sunlight in the summer season. And their summer season is not as hot as India's summer. In India, summer season means temperature goes up to 45 degrees. In Delhi, Gaya, Bihar Sharif, it's very common. But in Europe, the temperature goes up to 25, 27, 28. That's the highest that the temperature goes. Sometimes they have 30 plus, but they don't have 40 plus. That's a rarity, rare case. Their climate is different. That's why they're all white skin people, because the temperature is usually low, all right? And that's why they have white skin. Sir, Skin color. we can say, sir, we can say that, sir, our winter season is same as Their summer. As their summer. as their summer. In a way. By the way, guys, the skin color is only a result of sunlight, nothing else. Your ancestors lived in a certain place for a long time and their skin became of a certain color. Those people who were exposed to the sunlight for long time, thousands and thousands of years, their skin adjusted to that extra sunlight and became dark. So people in Africa are black, no other reason except for one, that in that area, in that region, the sunlight falls more, and the people who had lived there for thousands and thousands and thousands of years, their skin had to adjust to that extra sunlight. Dark skin can handle sunlight better. White skin people, if they are in the sun for a long time, they will develop skin cancer. White skin people have a bigger risk of developing skin cancer. Black skin people don't develop skin cancer easily. Skin cancer is a bigger problem with white skin people. Brown skin people, we are fine. We don't really have a problem.
So white skin people have a problem. You are fair, but you are not white. Your skin has more melanin, and that's why those people who are from England, Germany, they can develop skin cancer more easily. Ultraviolet rays in the sunlight can damage their skin more. Brown skin, black skin has a better shield. It has a better protection against ultraviolet rays. So when you guys are playing in the sunlight, especially in those countries where the temperature goes to 45 degrees, 40 degrees, the temperature is higher, there is more ultraviolet rays. Okay. So the skin can be damaged. You can develop a skin cancer. White skin looks good to you guys, maybe, but the fact is, it is not good quality. Dark skin is higher quality skin. It protects you. Our skin should protect us, right? So dark skin protects us against ultraviolet rays better than white skin. You can read about it. So the skin difference, the color difference in the color in skin is only because of the sunlight. The sun does not throw the same amount of light everywhere because the earth is round and there is a certain, path that the earth moves on, revolves on, and that's why the certain parts of the world has more sunlight, less sunlight, intense sunlight, light sunlight, and that's why, different skin colors of people. Polar bears, they have so much of fur on their skin. Other bears are different. Polar bears are white in color. Other bears are black in color. So what's going on? Why so much? It's all related to where they have grown up. Okay, why these camels, when you touch their bottom of their feet, it's soft. Horses are hard because these camels have grown up, have evolved in deserts, and desert requires their feet to be soft. So this is called adaptation in science, anukulan, that wherever we live, our body slowly and slowly adapts to that place. These fish and other things that are in water, their skin has a certain layer of wax. Water does not harm them. If we live in the water, our skin will be harmed by water, okay? But the fish skin doesn't get harmed because they have a special adaptation there, okay? Adaptation, anukulan. Okay, anyways, coming back to this. There Sir, isn't a garden. our winter Yes. is same as their summer. Our winter is the same as their summer. Our winter, can you? Is the same. Our winter is the same as their summer. Okay, sir. लेकिन ये एक सेंटेंस है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है. सेंटेंस करेक्ट है. इंग्लिश में आपने जो बात बोली कि हमारा विंटर उनके समर के जैसा है, राइट? आवर विंटर इज द सेम एज देयर समर. जैसा हमारा विंटर वैसा उनका समर होता है. ओके, सो आवर विंटर इज द सेम एज देयर समर. एक सेंटेंस है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है. फैक्चुअली करेक्ट समझते हो ना? मैं बोलूं माय नेम इज रानी, तो सेंटेंस तो करेक्ट है, बट फैक्चुअली करेक्ट नहीं. माय नेम इज नॉट रानी, आई एम नॉट अ गर्ल. ओके, so some people will not agree with you that this is not true, but they'll understand what you mean because the sentence is correct here. There isn't a garden there, but there is a balcony in my bedroom. I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer evenings. She likes sitting in the sun. She likes sunbathing. She likes sunbathing. I love my new flat for many reasons. I love my new flat for many reasons. बहुत सी वजह है पसंद करने की. I love my new flat for many reasons. लाइन अच्छा है ना? I like my English class for many reasons. The big kitchen, the sunny living room, ये सब वजह बता रही है वो, right? वजह बता रही है ना? I love my new flat for many reasons. The big kitchen, the sunny living room, but लेकिन सबसे बड़ी वजह, but most of all, I love it because it's my first home. Right? Okay. मैं अपनी वाइफ को बहुत वजह से प्यार करता हूँ. I love my wife for many reasons. She's beautiful, she's kind,
she is caring, but most of all, I love her because she's my daughter's mother. है ना? आई बात समझ में? तो ऐसे करके आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे आप बोले ना, मुझे मेरा क्लास बहुत वजह से अच्छा लगता है। आई लाइक माई क्लास फॉर मेनी रीजंस, द ऑडियो फाइल्स, द क्लास रिकॉर्डिंग, बट और भी वजह दे सकते हैं क्या क्या अच्छा लगता है आपको क्लास में। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, एक फ्रेज सीखे सबसे बड़ी यहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ ऑल मतलब मोस्ट ऑफ ऑल, सारे वजहों में सबसे बड़ी, मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ ऑल I love my class because there is no pressure on me. There is no pressure on me. Okay? I feel very free. Okay. तो वैसे ही आप सोच सकते हैं। अभी पढ़िएगा प्लीज, रीड दिस टेक्स्ट 5, 6, 10 टाइम्स, लाइन बाय लाइन 5-10 बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। मैं कैसे पढ़ता हूँ? अगर लगे पढ़ रहे नहीं हो पा रहा तो रिकॉर्डिंग है ना देखने के लिए, रिकॉर्डिंग देखना कि सर कैसे पढ़ते थे इसको, वैसे ही पढ़ना मेरे तरीके से। नाउ वी हैव अ couple of minutes and I want you to do this exercise 5. Write some notes about where you live. यार देखो तो नंबर 5 में क्या लिखा है? Write some notes about where you live. यार नोट्स लिखो तो नोट्स मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से माई नेम इज विनय शंकर सोनी, तो नोट्स में खाली विनय लिख दूंगा मैं। नोट्स में क्या लिखूंगा? या नेम विनय, ठीक है। वेयर इज इट, तो आपका पूरा सेंटेंस है माई हाउस इज इन आलमगंज, माई हाउस इज इन शिखाना, राइट। लेकिन आपको यहाँ उतना नहीं लिखना है, खाली लिखना है शिखाना, ठीक है। और आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ टाउन, नॉट द सेंटर ऑफ टाउन, कुछ भी इस तरह की बातें भी लिख सकते हैं, राइट। इज इट ओल्ड और न्यू, आप अपने घर के बारे में सोचें, इज इट ओल्ड और न्यू, तो आपका एक मन आएगा, कहेंगे एकदम नया भाई, वेरी न्यू, राइट। हाँ नया ही है, क्वाइट न्यू, ऐसे मन में है, हाँ नया ही है, तो कैसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? क्वाइट न्यू। नहीं यार पुराना है, ओल्ड, यार बहुत पुराना है यार, वेरी ओल्ड। हाँ पुराना है यार, क्वाइट ओल्ड, ऐसे वाला फीलिंग है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको अलग अलग फ्रेजेस सिखा रहा हूँ ना। एक नया है आपके, नया है यार, न्यू, बहुत है नया यार, अभी तो 2 साल पहले बन गए क्या, तो वेरी न्यू, नया ही है, ऐसे वाला फीलिंग आ सकता है आपके मन में। तो कैसे बोलेंगे? क्वाइट न्यू, ताकि आपको अलग अरे का फील आए, राइट। यार पुराना है यार, ओल्ड, यार बहुत पुराना है यार, दादाजी बनवाए, वेरी ओल्ड, ये 100 साल पुराना, लाइक दैट, ओके। पुराने हैं देखे तो, इट्स क्वाइट ओल्ड, टोन मैच कर लेना, ओके। और उसके बाद फिर नंबर्स भी डाल सकते हैं। वेरी न्यू, ओनली 5 years old, ओनली 5 years old, 5 साल पुराना घर नया ही कहना जाएगा ना भाई, ओके। वेरी ओल्ड, 120 years old, 70 years old, ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट। इट्स क्वाइट ओल्ड एक्चुअली, 30 years old। आपके मन में जैसे फीलिंग आ रही है वैसे, पहले मन में क्या फीलिंग आती है जवाब के तौर पे? इज इट ओल्ड और न्यू, जवाब आपको अपने घर के बारे में बताना है, आपको क्या फीलिंग आती है? हिंदी में जो फीलिंग आती है वही इंग्लिश में। कम ऑन एवरीबॉडी, इज इट ओल्ड और न्यू योर हाउस, जो अपने मन में आ रहा है वैसे ही बोलना, ठीक है। पहले वो वाला फ्रेज देख लो। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या फीलिंग आ रही है? It's quite old. It's about 20 years old. ओल्ड, बहुत पुराना है यार, वेरी ओल्ड। यस फैजान। It's quite old, sir. It's about 20 years old. देखो देखो कितना बढ़िया से, इट्स क्वाइट ओल्ड सर, इट्स 20 years old, आगे नंबर भी डाल दिया फिर। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिखने का, इट्स क्वाइट ओल्ड, इट्स 20, बस क्वाइट ओल्ड 20 years लिख दिया, क्वाइट ओल्ड 20 years। एनी प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट, हाउ मेनी रूम्स आर देयर? नोट्स, नोट्स में पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता है, हाँ ठीक है। ओके ओके, 1 किचन, 2 bedrooms, 2 bathrooms, ऐसे लिख दिया। हाउ मेनी रूम्स आर देयर? इज देयर अ गार्डन? यस नो लिख दिया कुछ।
नहीं पूरा लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली यस लिख दिया। नोट्स है, नोट्स ध्यान रखो। हाँ नो लिख देंगे और यस लिख, क्योंकि नोट्स लिखने की बात हो रही है यहाँ पे। अभी क्या लिखा है? राइट सम नोट्स। हाँ नेक्स्ट, हु डू यू लिव विद? हु डू यू लिव विद? मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, भाभी, आंटी, अंकल जो है। हु डू यू लिव विद? family, डू यू लाइक इट? या डू यू लाइक इट? यस, नो, राइट, व्हाई? छोटा छोटा आंसर, पूरा सेंटेंस कभी नहीं लिखने का यहाँ पर, क्योंकि क्या लिखने के लिए कहा है? नोट्स। नोट्स मतलब जो जल्दी लिखा जाए। ओके, 1 word 2 words नोट्स। व्हाई? because they are caring. They are caring. ओके, डू यू लाइक इट? इट मतलब डू यू लाइक योर, Do you like it? ना लाइक इट, Home, ना house. डू यू लाइक इट? बात किस चीज की हो रही है? योर प्लेस वेयर यू लिव। ओके, डू यू लाइक इट? व्हाई? व्हाट इज द बेस्ट थिंग? वो वाला प्रैक्टिस करना होगा सबको। I like it for many reasons. This. But what is the best thing? The most of all, the best thing Most, about my house is, है ना? most of all. तो ये करना है आपको, नोट्स बनाना। अभी आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कल के लिए मैं आपको प्रैक्टिस बुक में होमवर्क, I would like to give you homework in the practice book for tomorrow. For tomorrow, your homework is in the practice book because you did writing. Okay, so you need a little bit break. And now do the reading. Open your practice book, everybody. Open your practice book. Open your practice book, everyone. Page number 25. We have done it already. 23, 24, we have already done. So everyone, do the reading. Read about a beautiful hotel, an interesting hotel called Malmaison Hotel. Okay? Read the text, do the exercises. That's your homework. कोई लिखने का काम नहीं है ना, पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन के आंसर करना। You will do it? Okay, everybody. That is all for today. And I'm going to see you guys tomorrow. Today is the 1st of November. So I have to create a new attendance register, attendance sheet. Okay, I'll do it. Tomorrow we will call the attendance. Remember which people are present today. Okay, कल उनका नाम लिखना है, हाँ? Okay. Yes, online there are very. I had already predicted it yesterday. मैंने कल ये predict किया था that there are going to be very few students present tomorrow, and that is exactly what has happened. Okay, so I'm going to talk to them all. I'm going to ask them why they went absent just like this, despite my warning. This is the reality of some students. I hope they have all a good explanation when they come tomorrow. Money will not change anything. They will pay me 100 rupees, 50 rupees, but their mentality will change. If their mentality will not change, they're not going to learn. To learn, you have to have a new mentality. Bhai, I have to try hard. I have to be sincere. I have to be honest with my word. Anyways, let's meet tomorrow, everybody. See ya. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Bye.